Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Assalamu alaikum, Meher. How are you? How's it going? So we're beginning physical quantities today, और physical quantities O level में भी है, IGCSE में भी है. One thing that I want to clarify, please write this down. Vernier caliper is not in the syllabus. Write this down. Assalamu alaikum, Temur. Assalamu alaikum, Mahram. Assalamu alaikum, FIFA gamers. I don't know what your actual name is. Micrometers is in the syllabus. So micrometer से रीडिंग लेनी आनी चाहिए और वर्नियर कैलिपर का नहीं पता होना चाहिए. Those appearing in May, June 23 should be taking this session in summer. The reason is when you come in November, it's too close to the exam. तो नवंबर यूजुअली लोग क्या करते हैं, मई जून वाला सेशन लेने के बाद वो अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है. उसके बाद इफ़ दे फील दैट दे स्टिल नीड टू रिवाइज देन दे टेक द नवंबर सेशन. उससे उनकी रीइंफोर्समेंट हो जाती है. बट नवंबर वाले सेशन में हमेशा प्रॉब्लम ये होती है, इट्स वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम और पैनिक ज़्यादा कर रहे होते हैं. सो अभी आप पैनिक नहीं करोगे उतना. एनी टिप्स फॉर GIK? यस तैमूर, it is tough, but it's a lovely experience. Assalamu alaikum. चलें जी, let's start. So the first thing is physical quantity क्या होती है? Can somebody tell me in the chat what a physical quantity is? I don't exactly remember कि वो per module क्या cost है, because there's so many modules, but you can check in the app. Definitely tell. What is a physical quantity, guys? जवाब बताओ ना, शाबाश. Well done, Rafi. Any quantity which can be measured is a physical quantity. Well done, Jabin. Well done, Rafi. अब physical quantities के अंदर there are two further subcategories. The first is base quantity. Can you guys tell what a base quantity is? Excellent, Taimur. I will wish you and I'll pray for you. Inshallah, you'll do great. Don't worry. Taimur has an entrance test on the 23rd or 24th of July. Best of luck, Taimur. Base quantity क्या होती है?
any quantity which has an appropriate unit and a numerical value. नहीं नहीं तैमूर, नॉट ट्रू, भूल गए हो इतनी जल्दी. बेस क्वांटिटी होती है अ क्वांटिटी which cannot be split any further into simpler quantities. क्या होती है जी? एक ऐसी क्वांटिटी which cannot be split any further into simple quantities. जी अरम बिल्कुल 100% यूट्यूब के ऊपर जो भी है वो दैट इज़ फॉर एवरीबडी. Oh, you said it for physical quantity, Taimur. Okay. So base quantity is a quantity which cannot be split any further into simpler quantities. इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई एग्जाम्पल दें इसका. आई विश यहाँ पे कोई माइक होता, मैं भी किसी को माइक पे बुला लेता, बट यूट्यूब का यही मसला है. लाइव क्लासेस में वी हैव माइक्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन गोइंग ऑन. जी बताइए जल्दी से, शाबाश. कोई बेस क्वांटिटी की एग्जाम्पल दें, बताएं. What is it? Yes, Ayan, well done. Absolutely, that is the list. अभी इसमें कोई आपकी लिस्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग है. मैं वो चीज़ें लिखता हूँ जो अयान ने लिखी हैं. Let me write them down. So Ayan has written some and missed out some. For example, you have length, mass, time, temperature, amount of a substance, current, and light intensity. So ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं यहाँ पे, these are all base quantities. Now the question is, why do we call them base? We call them base because you can't break them down into further simpler quantities. For example, मैं कहता हूँ जी ये ऑब्जेक्ट है, सही है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और मैं इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने लगा. सो आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. So let's say guys, the length of this object from here to here turns out to be 10 centimeters. Got it? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से तोड़ देता हूँ, गौर से सुनना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से तोड़ देता हूँ तो मेरे हाथ में एक इसका पीस आ जाएगा. सो आई हैड दिस बिग ऑब्जेक्ट and now I've broke it from the center, and now I have a smaller piece in my hand. मुझे बताओ, if I break it from the center, तो ये जो smaller piece आ रहा है इसकी length कितनी होगी? Can you guys tell? This smaller piece, what will its length be? शाबाश, बताएं, बिस्मिल्लाह करें. Exactly. Like Ayan said, it'll be 5 centimeters. So what you're understanding over here, Ayan, is, and the rest, Fatima and everybody, that उसको सेंटर से तोड़ने से उसका नंबर टूट गया है, उसका यूनिट नहीं टूटा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो सेंटीमीटर है, वो हद से हद क्या होगा, मिलीमीटर बन जाएगा. द इम्पॉर्टेंट बिट इज कि लेंथ का जो यूनिट मीटर है वो चेंज नहीं हो रहा. मतलब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी इसको आप छोटा कर दें तो इतना छोटा जो पीस है दैट विल बी लाइक फॉर एग्जांपल 2.5 सेकंड्स. ये नहीं हो सकता, ये गलत है. अगर मैं आपसे कहूँ जी ये जो छोटा पीस है इसकी क्या वैल्यू, मे बी यू कैन से 2.5 mm, ये छोटा हो गया, लेकिन लेंथ का यूनिट लेंथ ही रहे. इफ़ यू नोटिस तो पहले भी यूनिट मीटर में था, अब भी यूनिट मीटर में है, और बाद में भी यूनिट मीटर में ही है.
Are you guys with me? So that is why length is called a base quantity, because if you keep on breaking it down, the unit does not break. Absolutely, Ayan. Spot on. So length का यूनिट आ गया मीटर, mass का यूनिट आ गया kilograms, time का यूनिट आ गया seconds, temperature का यूनिट आ गया Kelvin, amount of a substance is mole. What is the unit for current? कोई बता सकता है कि करंट का क्या यूनिट है? Well done, well done, well done. So, यहां पे मसला है. देखो, when you write, I know सारे सही बोल रहे हो, सबके ज़हन में एक चीज़ आ रही है. What I've written is something which is misleading. और उसको ठीक करो. बच्चे, आप लोग जो कह रहे हो कि यहां पे मैं लिख दूं एम्पेयर, कैपिटल ए लिख दिया, बट एम्पेयर करंट का यूनिट थोड़ी है. एम्पेयर तो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि करंट तो कुछ भी हो सकता है. एयर में भी करंट्स होते हैं, पानी में भी करंट्स होते हैं. याद रखिएगा. Exactly, Ayan. So you must correct this, that the name of the quantity is electric current. And if you ask me, मैं यहाँ पे नोट में साइड पे लिख देता हूँ कि करंट क्या होता है. करंट तो भाई एक डिस्टर्बेंस है. What is current? Current is a disturbance in a medium. अब डिस्टर्बेंस का तो कोई यूनिट नहीं होता ना. कुड बी एयर करंट्स, कुड बी वाटर करंट्स, एक्सेट्रा. अब इलेक्ट्रिक करंट, तार में जो करंट चल रहा है, जिसको आप बिजली कहते हो, उसका यूनिट एम्पेयर है. सो एग्जाम में भी पूरा लिख के आना. Hijab, the only unit that you need to know is for electric current. Absolutely zen. This is for both O-level and IGCSE. And I missed a question in the middle. Zen, you can download the Teaching Circle app. You can also register through the website, and our systems are automated. You can register for the course starting tomorrow. Light intensity का यूनिट क्या होता है? Candela, which is CD. मेरा एक सवाल है यहाँ पे. ये सारी की सारी quantities are called base quantities. Correct? अच्छा, ज़रा मुझे जल्दी से ये बताओ अपने चैट में कि आप लोग किस किस ग्रेड में हो. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन ग्रेड 9, हाउ मेनी ऑफ यू इन ग्रेड 10, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग इनटू ग्रेड 11. जल्दी से बताओ. आयान, कैंडिला का सी छोटा. Maha is in grade 10, Mayor is in grade 11, Bhai Sahab is in grade 11, Pratibha is in grade 10, Rafi 11, Armin is in 10. Interesting. So, and we've got one kid who's going into 9. Cute. AMV's going into 10.
and just starting 10 in 2 months. Great. So guys, most of you are in 10 and 11. I'm going to ask you a question and you will just have 10 seconds to answer that question. Okay? Please get ready. The question is, आपने सिर्फ जवाब लिखना है, सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सवाल बाद में लिखना. But first you have to write down the answer. Get ready. And you have to tell me in the chat. आपने मुझे चैट में जवाब देना है इसका. सोच समझ के दीजिएगा. The question is, what is the symbol for work? Shabash, tell me in the chat. Shabash. I'm waiting for your answers. Ayan says joule, Newton meter. Mayor, you say joules. Maz, you say joules. Pratibha, you say joules. Maha, you say joules. Guys, you are all wrong. Read the question carefully. मैंने आपसे पूछा था what, और ये एक बहुत बड़ी गलती है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is the symbol for work. I'm not asking you for the unit of work. The unit of work is joule. There's no question about it. The symbol होता है one letter representation of that quantity. So आप कहोगे जी symbol for work is W. For example, work is 10 joules. Do you understand? बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैं आपसे पूछता हूं जी, अब आप मुझे बताओ. You guys tell me, maybe you get it now. What is the unit for power? बताएं. Shabash. Chale. At least most of you are correct now. That is right. The unit for power is what? So you will say power is, for example, 20 watts. ये W जो है, this is watt, which is the unit for power. अब आपको क्लियर हो गया कि जी सिंबल क्या होता है और यूनिट क्या होता है. इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना. नेवर गेट कंफ्यूज्ड. और ये जो टेबल है, this table, in which on the left side I've written the quantity and on the right side I've written the unit. This table is so important, so important. Why? नोट में लिख लो, और ये आप लोग आगे जाके जब मेरे साथ कोर्स पढ़ोगे
तो आप लोग मुझे ज़रूर ये सवाल करोगे और मैं आपको कहूँगा कि मैंने पहले दिन बताया था, और भूल जाओगे तुम लोग, क्योंकि भुलक्कड़ हो, याद नहीं रखते। याद रखना है इस चीज़ को, याद रखना है। कोई चीज़ याद करनी हो, क्या करते हैं आप? उसको 10 दफ़ा बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, आपको याद हो जाता है। याद रखना दैट फॉर ऑल कैलकुलेशंस, all calculations in the entire syllabus always refer to the table above for units. अब मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मुझसे आगे जाके किसी भी दिन मुझसे पूछ लोगे रैंडमली कि जी हमें एक क्वेश्चन आया दैट द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is 10 Newton and the distance that the object moves is 10 centimeter. Question आ गया, calculate work. निकाल लीजिए ज़रा work. शाबाश. Get your calculators out. Get ready. शाबाश शाबाश शाबाश. Get ready. Well done, hurry up. Well done, Maz. Well done, Ayan. The answer to this is, किस तरह करेंगे? आपके लिखेंगे जी वर्क इज फोर्स इन डिस्टेंस, आप कहेंगे फोर्स इज 10 न्यूटन. अब डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर. आप लोग आगे जाके पूछोगे कि जी हम सेंटीमीटर लिखें या मीटर लिखें. ऑलवेज रेफर टू दिस टेबल. यहाँ पे देखो, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट केजी है, टाइम का यूनिट सेकेंड्स है. ये हमेशा यही यूनिट्स यूज किए जाएंगे, हमेशा. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सो 10 into 10 divided by 100, converting centimeters to meters, so you will get 1 joule. Now for example, I say that the mass of an apple is 150 grams. Can you please calculate the weight of the apple? Assume G to be 10 Newton per kg. शाबाश, जल्दी से बताएं. फहद, अब मेरे लेक्चर्स का स्टाइल ये होता है कि आप लोग साथ साथ लिखते हो. जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे फिज़िक्स नहीं आएगी, ये याद रखना. सो मैं हमेशा हर बच्चे को ये कहता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाओ. वेल डन एवरीबॉडी, हरी अप. Ayan has given us a response, and what about the others? Well done Maz, well done Ayan, well done Hijab, well done Pratibha, Momin, Rafe, शाबाश. सब ने बिल्कुल सही जवाब दिए. Hijab use well, well done. मेरी जान फ़हद, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग्स आती हैं ना, आप वो हो सकता है बिल्कुल कोई ना कोई बात मैं बोल रहा हूँ आपसे मिस हो गई, तो रिकॉर्डिंग आप फिर से सुनो ना उसकी. इसलिए तो मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है. Also guys, those of you who are watching us, I'm having a meet and greet in Lahore,
इंशाल्लाह ऑन सैटरडे 5 PM to 7 PM. तो आप लोग ज़रूर आओ और हमें मिलो. मेरी टीम आई हुई है फ्रॉम कराची. Dr. Zara is here. She'll be taking biology on Teaching Circle. Sir Lukman will be there. He's taking chemistry. Miss Samia will be there. She's also taking chemistry. Miss Robila will be there. She's taking economics. तो हम मिलो because हम सब ने ऑनलाइन पढ़ाना है. तो बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग आके जो भी आपके एप्रीहेंशंस हैं या टीचिंग स्टाइल पूछना है या जानना है टीचर को, बड़ा अच्छा होता है अगर वो आपका बॉन्ड बन जाए टीचर के साथ. मेरा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने ऑनलाइन के बच्चों के साथ बना है वो फिजिकल वालों के साथ भी नहीं बनता. द रीज़न इज़ कदर ज़्यादा आती है. अब मैं देख नहीं पाता ना. सो नाउ व्हेन somebody comes and tells me I was in your online class, that means that kid really remembers because उसने तो मुझे हमेशा स्क्रीन पे ही देखा है. तो मैं चाहता हूँ कि हम वो स्क्रीन वाले कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करें. सो डू कम एंड मीट अस. विल बी पोस्टिंग इट एज़ वेल ऑन आवर सोशल चैनल्स. Saturday 5 PM to 7 PM, Lahore Teaching Circle HQ. You can Google map the location. So, well done everybody. W is equals to mg लिखना है आपने. Mass is going to be 150 divided by 1000 into 10. So this is going to be 1.5 newtons. अच्छा, चलो अब मैं तुम लोगों को ज़रा डीप डाइव कराता हूँ. ये तो हो गया हमारा वार्म अप. अभी चैप्टर शुरू होने लगा है. सबसे पहली चीज़ जवानों, सबसे पहली चीज़ आती है मेजरिंग लेंथ. द फर्स्ट थिंग कि जब आप लेंथ मेजर करते हैं तो आपके पास मीटर रूल भी होता है और आपके पास माइक्रोमीटर भी होता है. मैं वर्नियर कैलिपर इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज अब वो सिलेबस में नहीं है. सो व्हेन यू आर मेजरिंग लेंथ यू हैव मीटर रूल्स, यू ऑल्सो हैव वर्नियर कैलिपर्स. जुदात नहीं, प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड लेक्चर्स है ही नहीं, मैंने बनाए नहीं. फाहद, जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं दैट्स वंस अ वीक. टीचिंग सर्कल ऐप के ऊपर हर रोज़ होनी है. सो प्लीज़ फील फ्री टू टेक आइदर. लेकिन हम ऐप के ऊपर फ्री कंटेंट भी लगाते रहेंगे, सो प्लीज़ देखना उसको. मीटर रूल, माइक्रोमीटर. Rafi, you've asked, should we take G to be 9.8 or 10? They will always tell you. If they don't, just take it as 10. Okay? आई जी लेंथ मेजर करते हैं मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर से भी करते हैं, माइक्रोमीटर से भी करते हैं. दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क एक ऐसी चीज़ में आता है जो हम गलत बोलते हैं. कैन समबडी टेल मी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क है? लाइक मेजरमेंट तो दोनों से लेंथ मेजर हो रही है, बट वाई इज़ वन बेटर, वाई इज़ वन द अदर वन नॉट एज गुड? व्हाट्स द रीज़न? शाबाश, बताओ क्या वजह है? व्हाट्स द रीज़न? वो क्या चीज़ है जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें मीटर रूल से आगे आके माइक्रोमीटर बनाना पड़ा और इसके अंदर फिर हमें और नहीं उज़मा, वाह जी वाह. आर हेड इंटर्न इज़ हेयर, मुस्कान. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और सलमा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. तैमूर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. तैमूर तो ग्रेजुएट है, तो तैमूर को तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार भेजता हूँ. सलमा, आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट हैव वी इंटरेक्टेड, बट मुस्कान को आई अंडरस्टैंड. मुस्कान इज़ आवर करंट हेड इंटर्न एंड ऑल्सो आवर स्टूडेंट. सो असल जवाब वो है, मुस्कान ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं लेकिन उन दोनों में से एक लफ्ज़ ठीक है, एंड दैट वर्ड इज़ गाइज प्रिसिजन. प्रिसिजन का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है? प्रिसिजन का वर्ड निकला है प्रिसाइज से.
प्रिसाइज मुझे बताओ, एक बच्चा थोड़ा कम प्रिसाइज है, एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज है, तो बेहतर कौन होगा? हेलो फातिमा, अ वेरी कूल बिजनेस मैनेजर। ओ सलमा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम नून। हाँ जी, सो कौन ज़्यादा बेहतर होगा, जो बच्चा कम प्रिसाइज है या जो ज़्यादा प्रिसाइज है? ज़्यादा प्रिसाइज का मतलब है ज़्यादा बारीकी में जाता है, डू यू अंडरस्टैंड, ज़्यादा गहराई में जाता है। सो मीटर रूल की जो प्रिसीजन होती है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, और माइक्रोमीटर की जो प्रिसीजन होती है दैट इज 0.01, क्या लिखूं आगे? 0.01, आगे बताएं क्या लिखें? जी उमर, बस इंशाल्लाह ये ख़त्म करके मैंने 10 मिनट में नमाज़ पढ़नी और फिर हम स्टार्ट करते हैं। 0.01 mm, मिलीमीटर्स। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 0.001 cm। अब बताओ ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? एक बंदा कहता है जी मैं 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर करूँ, एक बंदा कहता है ऐसी की तैसी मैं 0.001 तक मेजर करूंगा। कौन ज़्यादा बेहतर हुआ बताएं? Who's better? तो समझ आ गई जवानों कि absolutely. So micrometer is more precise than the meter rule. Alright guys, so that is the end of today's class. Take care everybody, best of luck, Khuda Hafiz.